Bismillahirrahmanirrahim. I am Syed Ali Naqi Kazmi, Department of Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is Jhon Locke is a father of liberalism. So let's start. Jhon Locke was a key figure in the development of modern liberal political thought. He also has a great impact and influence on the development of political philosophy, modern political philosophy. And he was also a key figure during Enlightenment period. So there are certain points on the basis of which we can say that Jhon Locke is father of liberalism, or why Jhon Locke is referred as father of liberalism. So there are certain points. The first is his concept of rights. Locke argued that individuals possess natural rights, including the right to life, liberty, and property. And these rights are inherent and not granted by any government. तो अब लॉक के नज़दीक जो राइट्स हैं, they are natural. These rights are natural. And these are not granted by the government. ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए नहीं हैं, बल्कि ये नेचुरल राइट्स हैं लोगों के, जिसमें वो बुनियादी तौर पर 3 राइट्स बता रहा है: लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और वो गवर्नमेंट को महदूद कर रहा है इस हद तक कि वो सिर्फ लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। उसका काम एज एन इंस्टीट्यूशन ये है कि it must protect the rights and the liberties of the people. It should not interrupt and violate the rights of the people. तो इस लिहाज से उसका जो कंसेप्ट ऑफ राइट्स है वो ये समझता है कि राइट्स आर नेचुरल एंड देन दे आर नॉट ग्रांटेड बाय एनी गवर्नमेंट। फिर इसी तरह से हम ये देखते हैं कि उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट इज क्रिएटेड, अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड. So there is a concept of limited government. There is not a concept of an absolute authority in the philosophy of Jhon Locke. Jhon Locke का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके नतीजे में जो स्टेट और गवर्नमेंट बनती है वहाँ पर अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेड इख्तियार है गवर्नमेंट का. और गवर्नमेंट का इख्तियार उस हद तक है कि इट शुड एंड इट मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल. It should not create hurdle in the way of the people, and it should facilitate the people to enjoy their rights. कि वो लोगों के rights को enjoy करने के लिए उनको facilitate करें, उनको facilities provide करें, उनके लिए hurdles create ना करें. और फिर वो ये कहता है कि if government is failed to protect the rights of the people, liberties of the people, so he has given the right of revolt to people, that people have the right to revolt, to topple the government. कि लोगों के पास ये इख्तियार है कि अगर गवर्नमेंट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही, उनकी लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, तो वो उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, उसे टॉपल कर सकते हैं और उसकी जगह न्यू गवर्नमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं. इस तरह एक लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट उसने दिया, एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी का कंसेप्ट नहीं दिया जिस तरह के हॉब्स का कंसेप्ट था कि उसने अपनी सारी पावर्स जो हैं अपने रूलर को दी और उसे एब्सोल्यूट रूलर बना दिया था. बट लॉक वाज अगेंस्ट द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी in the state. So he was also against the arbitrary power of the government. कि गवर्नमेंट के पास arbitrary power नहीं होनी चाहिए. The role of the government must be confined by the constitution and the set of the laws. कि लॉक ये कह रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, सेट ऑफ लॉज हो जो कि
जो गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है उसका दायरा कार है उसको मुतय्यन करे कि जहाँ तक गवर्नमेंट के पास उसकी पावर्स जो हैं उनका दायरा कार मुतय्यन हो कि वो कहाँ तक उसका दायरा कार है और उस पर क्या लिमिटेशंस हैं। कंसेंट ऑफ पीपल और कंसेंट ऑफ गवर्न के लिहाज से एक बात की जॉन लॉक ने कि देयर मस्ट बी अ गवर्नमेंट which is based on the consent of the people, the will of the people, the wish of the people. The government must rule in accordance with the consent of the people. कि लोगों की मर्जी के मुताबिक, विल के मुताबिक गवर्नमेंट रूल करे और गवर्नमेंट तब लेजिटिमेट है जॉन लॉक के मुताबिक अगर वो लोगों की कंसेंट के मुताबिक है, वो उनकी विल और विश के मुताबिक है। अगर वो उनकी विल और विश के मुताबिक नहीं है, इट मीन्स इट इज़ एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव द राइट टू टॉपल द गवर्नमेंट, टू रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इस तरह कंसेंट ऑफ पीपल के लिहाज से ये कंसेप्ट दिया। और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है या एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उसके लिए देयर मस्ट बी अ कंसेंट ऑफ द पीपल, देयर मस्ट बी विल एंड विश ऑफ द पीपल एट द बैक ऑफ गवर्नमेंट। फिर इसी तरह से स्टेट एंड चर्च के लिहाज से उसने ये बात की कि स्टेट एंड चर्च should have their defined role. They should not interfere in their affairs, and people are free to perform their religious activities and rites, and church should not interrupt in the affairs of the government, and government should not interrupt in the affairs of the church. So they must have their defined role. So on the basis of these points which I have discussed, it can be concluded that these principles laid the groundwork for the liberal political thought and influenced later thinkers such as Montesquieu, Rousseau and the framers of the American Constitution. और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आइडियाज़ थे जॉन लॉक के, इसने मुतासर किया बाद के आने वाले जो फ़िलासफ़र हैं जिसमें मॉन्टेस्क्यू हैं, रूसो हैं, फिर फाउंडिंग फादर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं अमेरिकन, उनको मुतासर किया, उनको इन्फ्लुएंस किया। इसी तरह से अगर हम कहें कि जॉन लॉक के जो आइडियाज़ थे, उनकी जो फ़िलासफ़ी थी, उसने इंडिविजुअल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट एंड लिबरल डेमोक्रेसी में एक अहम किरदार अदा किया है, तो ये बेजा नहीं होगा। तो आज का ये मेरा टॉपिक था कि हाउ जॉन लॉक इज़ रेफर्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।